Hello friends, welcome to a new video where we are going to work on basics of electronics. नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ नया करेंगे। आज हम सिंपल लाइट फॉलिंग रोबोट बनाएंगे। In my last video we have seen what is a transistor and what is an NPN transistor. हमने पिछले वीडियो में देखा था NPN क्या होता है, NPN ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। NPN ट्रांजिस्टर पे तीन पिंस होते हैं, उसकी फ्लैट साइड अपने तरफ रखनी होती है। वी नीड टू keep the transistor flat side facing towards you, and there are three pins. One on the left is collector, on the right is emitter, and at the center is the base. Now what happens is it works as a gate. Whenever base receives a voltage which is higher than 0.7 volts, then there is connection between collector and emitter. So collector gets connected to emitter in that way. So this works as a gate. ट्रांजिस्टर में जब भी बेस पे 0.7 वोल्ट से ज़्यादा करंट आता, ज़्यादा वोल्टेज आती है या 0.7 आती है, तो कलेक्टर और एमिटर एक दूसरे को कनेक्ट हो जाते हैं और सर्किट कंप्लीट हो जाता है। उससे कम वोल्टेज पे ये गेट बंद होता है, तो कलेक्टर और एमिटर में कोई कनेक्शन नहीं रहता है, तो सर्किट आपका ओपन रहता है, मतलब सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है। बाकी के चीज़ें जो मैं इस प्रोजेक्ट में यूज़ करूँगा, the other things which I am going to use in projects are two BO motors. ये एक मोटर है, गियर्ड मोटर है, जो करंट भेजने पे चलती है। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज इज 3 volts to 6 volts. Now the other components which I am using in the projects are, this is a photoresistor. I am using two photoresistors. A photoresistor is a device which generates voltage based on the light intensity. लाइट इंटेंसिटी पढ़ने में ये वोल्टेज क्रिएट करता है। इसका रेजिस्टेंस कम होते जाता है, जैसे लाइट बढ़ता है रेजिस्टेंस और कम होते जाता है। सो दिस इज हाउ, अगर रेजिस्टेंस कम होता है तो वोल्टेज और करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ने से आपका डिवाइस में जो भी आउटपुट लेना है आपको आप ले सकते हो। तो ये लाइट सेंसिटिव है। नेक्स्ट है, वी आर गोइंग टू यूज टू रेजिस्टर्स ऑफ 10 किलो ओम्स. So last but not the least, we are using a 9 volt battery. So these are the components which we are going to make, which we are going to use, and we are going to make a simple light following robot. So our robot is going to follow wherever we are going to put our light, that is a torch light. So that robot is going to follow that in that particular manner. So जहाँ पे लाइट होगी वहाँ पे रोबोट मुड़ेगा, उस तरफ जाएगा। ऐसा रोबोट बनाएंगे। इसमें हम कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं करने वाले। वी आर नॉट गोइंग टू प्रोग्राम एनीथिंग हियर, वी आर गोइंग टू मेक ऑल द कनेक्शंस बेस्ड ऑन बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑल द थिंग्स व्हिच वी हैव लर्नड इन आवर प्रीवियस वीडियोस। सो देखते हैं। सो आई एम प्लेसिंग ऑल द कंपोनेंट्स हियर so that I can make the connections. I'll take a breadboard. Okay, so I have a breadboard. I will arrange my 9 volt battery. So this is positive, so I generally show positive by red. This is negative, this is by black. So breadboard, all the rails are connected. These two rails are connected horizontally. ये दो horizontally connected है, उसी तरह ऊपर के दो, और बीच के सारे vertically connected है, A से लेके E तक और F से लेके J तक. So all these holes are connected vertically from A to E and F to J. I have already explained breadboard in my previous videos, so I'm not wasting time on that. Now let us start making the connections. So I'm going to place two motors like this and like this here. Okay, now you need to imagine this as a robot. So these two motors are my two wheels. I'm going to attach two wheels, one at this end, one at the right, and one at the left. So I'm going to attach two wheels here, and I'm going to attach a caster wheel here, and this is how my robot is going to run. So what is going to happen is, when I'm going to put light intensity on the right, I want the robot to turn towards the right, that is towards the light. Similarly, if I put my light intensity on left, the robot should turn left. So how that would be possible? So
द लॉजिक इज कि जब किसी रोबोट को राइट में टर्न होना है, व्हेन एनी रोबोट वांट्स टू टर्न टुवर्ड्स राइट, so this RPM, this motor should run with higher speed while this motor should run with slower speed. So when this wheel rotates with higher speed and this rotates with slower speed, the robot is going to turn towards right. Similarly, if I want to turn left, that is in this direction, then my right motor should run with higher speed and my left motor should run with slower speed. Now this is a very logical thing. You can imagine how that is happening. Okay? तो आपको ये समझ गया होगा कि अगर मुझे राइट टर्न लेना हो तो मुझे राइट टर्न लेने के लिए मेरी लेफ्ट की मोटर जोर से चलनी चाहिए और मेरी राइट की मोटर धीरे चलनी चाहिए, ताकि ये व्हील ज़्यादा घूमे, ये व्हील कम घूमे तो मेरी गाड़ी राइट में टर्न हो। उसी तरह लेफ्ट के लिए मेरा राइट का मोटर जोर से चलेगा और लेफ्ट का मोटर धीरे चलेगा। तो आइए अभी कनेक्शंस बनाते हैं। Let us make the connection. So I am placing the two emitters here, two transistors. Sorry, I am placing the two transistors. Now connections are going to be a bit tricky in this case, so pay attention to what I am doing. You see my placement. If you consider this as my robot chassis, now I am going to place my LDR. This LDR is going to be connected to this transistor and then finally to this motor. Similarly, this LDR is connected to this transistor and this motor, because if I increase the light intensity here, I want this motor to change its speed so that our robot is going to follow towards the light. So that is how we are going to make the connections. Now let us see. I am going to take two resistors. Place the resistor here. I don't have space, I'll just shift it here, just a moment. Okay, so I have connected one resistor to the base of the transistor which is on the left. रेजिस्टर एक पैसिव डिवाइस है, उसको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है। ओके, उसी तरह ये एक रेजिस्टर है जो मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। देखिए, एक रेजिस्टर मैंने राइट के बेस पे कनेक्ट किया है, एक रेजिस्टर मैंने लेफ्ट के बेस में कनेक्ट किया है। अभी ये रेजिस्टर को मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूँ, इसी तरह इसी रेजिस्टर को। तो मेरे दोनों रेजिस्टर्स कनेक्ट हो गए हैं ग्राउंड से। अभी कलेक्टर उसी मोटर का एक एंड कलेक्टर पे लगेगा। सो आई एम कनेक्टिंग this end of the motor, that is the negative end. As such, motor is also a passive device. It doesn't have a positive and negative. मोटर भी एक पैसिव डिवाइस है, उसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है, बट फिर भी हम ऐसा सोचते हैं कि मोटर जिस डायरेक्शन में घूम रही है वो उसका अपोजिट डायरेक्शन में उसका नेगेटिव है। इसलिए अगर ये आगे घूम रही है तो हम उसको पॉजिटिव बोलते हैं और पीछे घूम रही है तो हम नेगेटिव बोलते हैं। अगर और ये कैसे होता है, तो अगर हम वायर्स इसके उल्टे कर दे, जो यहाँ लगे वो यहाँ लग जाए और जो यहाँ नेगेटिव पे लगे वो पॉजिटिव पे लग जाए, तो मोटर उल्टा घूमना चालू करेगी। मोटर घूमती दोनों डायरेक्शन में है। सो आई हैव कनेक्टेड द नेगेटिव एंड ऑफ द मोटर टू द कलेक्टर। नाउ सिमिलरली here also, negative end of the motor I will be connecting it to the collector. Just a moment, I will connect it here as well directly. देखिए, so negative end to the collector, here also negative end of the motor to the collector. Okay, ये ध्यान रखना है कि ये दोनों टर्मिनल्स मोटर्स के एक तरफ फेसिंग हो। अगर आप उस तरफ इस मोटर को स्विच करके इस तरफ रखोगे तो आपका नेगेटिव पॉजिटिव रिवर्स हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि आप अगर मोटर्स लगा रहे हो, ये मैं प्रैक्टिकली फिजिकली बात कर रहा हूँ, तो ये याद रखिए कि जब फिजिकली आप जब ये रोबोट बनाओगे तो आपको मोटर्स का जो भी टर्मिनल्स है वो इस हिसाब से रखने हैं और टायर्स बाहर की तरफ लगाने हैं। तो ये मेरा पहला कनेक्शन हो गया। अभी देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अभी ये जो एमिटर है
ये एमिटर तो डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट होगा, बराबर है. This emitter would be connected directly to the ground. So I am taking an emitter, I am connecting it to the ground. Similarly, in this case, I am connecting it to ground. ये बहुत ब्लैक हो रहा है तो मैं इसको है ना थोड़ा, बिकॉज वैसे भी मोटर्स को कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है. मोटर्स डजंट हैव ऑफिशियल पॉजिटिव नेगेटिव, सो आई एम टेकिंग वन टर्मिनल ऑफ द मोटर एज ऑरेंज. Okay, so now my most of the connections are made. Now I'll be connecting my light dependent resistor to the transistors. अभी मुझे चाहिए जब यहाँ पे लाइट गिरेगी तो ये मोटर का स्पीड बढ़ना चाहिए, तो ये ट्रांजिस्टर के इस ट्रांजिस्टर के साथ ये कनेक्ट होगा, राइट वाला. So the transistor on the left will be connected to the LDR on the right. So let us make the connections. So this end, one end of the LDR will be connected to 5 volts. I'm connecting this end to 5 volts because this will be LDR will be running on our battery. So I'm connecting one end of the LDR to 5 volts and other end to the base. So this end I will be connecting it to the base. Okay, so देखिए अभी बेस पे इस ट्रांजिस्टर के मेरा LDR कनेक्टेड है और उसी के साथ मेरा एक रेजिस्टर भी कनेक्टेड है. अभी ये रेजिस्टर क्या करता है, तो जब इधर जो लाइट इंटेंसिटी पड़ रही है, अभी लाइट कितना गिरेगा कितना इंटेंसिटी होगा ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकता. सनलाइट अगर बहुत स्ट्रांग हो या टॉर्च का लाइट बहुत स्ट्रांग हो तो ये क्या होगा कि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा करंट आएगा और करंट आने की वजह से हमारा ट्रांजिस्टर गर्म हो सकता है, जल सकता है. उसको बचाने के लिए मैंने ये रेजिस्टर लगाया है. ये रेजिस्टर क्या करता है कि इधर आने वाला जो वोल्टेज है इसको एक लिमिट में रखता है ताकि ट्रांजिस्टर ना जले. तो ये जो हमने 10 किलो ओम का रेजिस्टर लगाया है ये ट्रांजिस्टर की जान बचाता है, ये ट्रांजिस्टर को जलने से बचाता है. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मैंने बहुत आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन किया है. इसको हम एक्चुअली वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बोलते हैं. So this is a resistor which is going to protect our transistor from excessive light. If I have an excessive light here, then that my resistance is going to drop drastically, which is going to cause excessive current flowing into the base. That results into my transistor heating up and finally getting damaged. So I don't want that thing to happen. So to protect it from such kind of hazards, I have used a voltage divider circuit where I have used a resistor, and that will be distributing the amount of voltage which is being received at the base. Now you can comment what is the voltage required at the base for transistor to function. I hope you all remember that I have told this in my previous video. What is the voltage required at the base for transistor to open the gate, that is to make connection between collector and emitter. Okay, now let us see. Now these connections are still left, so let us make our connections. So this end will be connected to the positive. Okay, so I've connected this end and other end of the LDR to the base. So my connections are ready now. So these are all mirror images, simple connections, very simple connections. You can go through the connection once. Now our final connection is left, that is the other end of the motor. Now other end of the motor, we will be connecting it to the 9-volt battery. So let us make those connections. Similarly here as well. Now see, so now all our connections are ready. So let us see how does it work. So I'm starting the simulation. Now right now you can see my both RPMs are 0. Now I'll increase the light intensity on the LDR which is on the right. So you will see my RPM on the left motor will increase.
See, so the moment we have light on my right side LDR, my left motor has started rotating, my right motor is 0, so my robot is going to turn towards the right. Now similarly, if I increase the light intensity on the left hand side LDR, then my right motor will start it's in rotation. See, so now my robot is going to turn towards left. Now if I put light intensity on both the LDRs, so see, my both motors are running with a speed of 266, that is same RPM. So my robot is going to go straight, in straight direction. If I reduce, you can see now if I reduce the light intensity here, so this motor is rotating at 188 rotation per minute and this motor is rotating at 272 rotation per minute. See, so what is happening is my light intensity over here is comparatively lesser than my light intensity over here, so my robot is going to turn towards right because here the light intensity is more. Similarly, vice versa. So I hope this is a very easy project to make and very fun project, fun blowing project. So I'm stopping the simulation. Let us see what is happening in the circuit once. So we have used a transistor, we have used a resistor, and we have used an LDR and two motors. So what happens is LDR, when a light intensity falls or light falls on LDR, it reduces its resistance, which causes current to flow and voltage is achieved. So when we have connected one end of the LDR to the base of the transistor, so now whenever the base receives the voltage, it is going to connect collector to the emitter. Now if you see the connections are quite easy. Collector is connected to one end of the motor, emitter is connected to the ground, and other end of the motor is connected to 5 volts. So what is happening is the moment it receives some voltage, it's going to connect collector to the emitter. So the current from 9 volt is going to come here into the motor and then going to go out from here to the collector, and as we have received the voltage here, collector gets connected to the emitter and it goes to the ground. So the circuit is complete. I hope that you must have understood this. This same thing happens for the other motor as well. So that is how our light following robot works. I hope आपको समझ में आया होगा. देखिए, अगर इधर बेस पे थोड़ा भी वोल्टेज 0.7 से ज़्यादा आ रहा है, ये मैंने कमेंट्स में पूछा था आपको कि कितना वोल्टेज आना चाहिए, आंसर मैंने बता दिया है. देखिए, बेस पे अगर 0.7 वोल्टेज से ज़्यादा आ रहा है तो कलेक्टर एमिटर से कनेक्ट हो जाएगा. तो अभी हमारा एमिटर ग्राउंड को कनेक्टेड है, हमारा कलेक्टर देखिए मोटर को कनेक्टेड है और मोटर का अदर एंड 9 वोल्ट पे कनेक्टेड है. तो देखिए, जब इधर वोल्टेज आएगा बेस पे तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, फिर मोटर में जाएगा, मोटर में से बाहर निकल के इधर से ट्रेवल करके कलेक्टर पे आएगा और कलेक्टर एमिटर से कनेक्टेड होने की वजह से ये ग्राउंड में चला जाएगा. मतलब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और हमारी मोटर चलेगी. अगर इसमें सर्किट कंप्लीट नहीं होता है तो मोटर चलेगी नहीं. इसी तरह ये दूसरे मोटर के लिए भी सेम चीज़ है. देखिए, ये 9 वोल्ट पे कनेक्टेड है, ये अदर एंड कलेक्टर पे है और कलेक्टर एमिटर से कनेक्टेड होगा. अगर यहाँ पे वोल्टेज आएगा तो ये इस LDR पे कनेक्टेड है, यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी चेंज होगी तो यहाँ पे वोल्टेज आएगा, वोल्टेज आने पे कलेक्टर एमिटर से कनेक्ट हो जाएगा और फिर ये जो करंट है, ये जो सर्किट है, ये थ्रू द कलेक्टर थ्रू द एमिटर ग्राउंड में चला जाएगा. इसका मतलब ये मोटर चलने लगेगी. तो दिस इज़ अ वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट एंड वेरी इजी प्रोजेक्ट टू मेक. आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मैं ऐसे आशा करता हूँ. थैंक्स फॉर योर टाइम. अपने समय दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद. जय हिंद.